Hello, my dear students. Action may not always bring happiness, but there is no happiness without an action. इस बढ़िया कोट के साथ मैं प्रसाद सर फ्रॉम इन इंफिनिटी इन्फो सॉल्यूशन welcome you all for today's very interesting topic, and the topic is programming language fundamentals. This is the most theoretical topic of this entire course. एंड आपके लाइफ में आप जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करोगे, सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए ये फंडामेंटल्स काम करेंगे. तो इस सेशन में 8 बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजीज को टच करने वाले हैं. सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फंडामेंटल्स. So as we are moving into the programming language world, let us try to correlate it with the real life terminologies so that you could be able to identify some technical terms within the programming language. तो यहाँ पे थोड़ा सा comparative analysis हम लोग करने वाले हैं. So I'll be taking you into the detailings about communication language and यहाँ पे रखते हैं programming language. If we are looking into this aspect in a very close way, we could be able to identify that ये word तो common है. And communication language we are using for communicating among ourselves, and programming language we are using for communicating with computer system, as we cannot communicate with the computer system more fluently with zeros and ones that we have already discussed. तो पहले communication language के fundamental के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. So everybody who is watching this particular session must be familiar with the mother tongue. राष्ट्रभाषा के साथ आप familiar हो, इंटरनेशनल लैंग्वेज दैट इज इंग्लिश के साथ आप फेमिलियर हो. तो आपका ये जो लैंग्वेज का लर्निंग का जर्नी था वो कैसे था, कहां से शुरू हुआ था? तो प्रोबेबली यू मे से दैट वी ऑल स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम दिस ए. दैट इज, यू माइट बी सेइंग दैट वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी विद अल्फाबेट्स, बट लेट मी टेल यू दैट ये अल्फाबेट आपके लिए अल्फाबेट तब तक नहीं था जब तक आपके टीचर ने या आपके पेरेंट्स ने आपको बताया नहीं कि डियर दिस इज ए. फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन सिंपल एग्जाम्पल. इफ आई ड्रॉ दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर एंड इफ यू डोंट नो व्हाट दिस इज, देन डेफिनेटली ये आपके लिए सिर्फ एक सिंबॉलिक नोटेशन है. तो दिस इज आ ऑफ जापानीज बाय द वे. तो अब अभी अगर मैंने बताया आपको दिस इज द आ ऑफ जापानीज, देन यू कुड गेट टू नो दैट this is working as one of the scripting character within Japanese language. So I mean to say that ये अल्फाबेट बनने से पहले ये कुछ ना कुछ symbolic notations थे. So some symbols are chosen for scripting of the language, and those symbols becomes what? Alphabets, right? So alphabets को group करने लगे आप next standard में, तो आपके लिए आए words. Words को आप group करने लगे तो आपने बनाए sentence. And sentence को बनाते टाइम you landed into the one more crucial aspect of the language, and जहां पे आपने ग्रामर पढ़ना शुरू किया, राइट? ओके, एंड सेंटेंस को जोड़ जोड़ के आपने बनाया पैराग्राफ, एंड देन सम मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट केम इनटू द पिक्चर. तो आपके लैंग्वेज का जर्नी ये था. इट स्टार्ट्स विद सम सिंबॉलिक नोटेशंस व्हिच आर कंसिडर्ड एज एन अल्फाबेट्स, देन वर्ड्स, देन सेंटेंस, एंड देन पैराग्राफ्स. तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बात करने वाले हैं. अगर कम्युनिकेशन लैंग्वेज के ये स्टेजेस हैं तो वहां पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या स्टेजेस होने चाहिए, राइट? सो नाउ वन मोर एस्पेक्ट. अगर आप इसको कह रहे हो दिस इज एन अल्फाबेट, राइट? ओके, बट अगर इफ यू आर फैमिलियर विद मराठी और हिंदी, आर यू कॉलिंग दिस पर्टिकुलर एंटिटी एज अल्फाबेट? नो. सो इन मराठी वी कॉल इट एज मूढ़ाक्षर. In Hindi, we call it as Varnamala. So what I wanted to show, what I wanted to highlight on is, जैसे लैंग्वेज बदलेगा उसका टर्मिनोलॉजी चेंज होने वाला है. इंग्लिश है तो इसको कह रहे हैं अल्फाबेट, मराठी है तो इसको कह रहे हैं मूढ़ाक्षर या बाराखड़ी, हिंदी है तो इसको कह रहे हैं वर्णमाला, जापानीज है तो इसको कह रहे हैं हिरागाना. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. जैसे लैंग्वेज बदलेगा नॉमेनक्लेचर बदलता जाएगा,
उसके नेमिंग टर्मिनोलॉजीज बदलते जाएंगे। वैसे ही जब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्क्रिप्ट करना है, मुझे राइट करना है प्रोग्राम को, तो आई विल बी यूजिंग द कीबोर्ड, एंड फिर कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर्स है दोज वी आर यूजिंग फॉर प्रोग्रामिंग पर्पस, राइट। सो इन दैट केस यहां के अल्फाबेट, यहां का वर्णमाला उधर जाके बन चुका है कैरेक्टर सेट। So the first terminology that we would like to highlight in programming language fundamental is character set. So जो characters use हो रहे हैं उस language के scripting के लिए we call that as character set. And for C programming, for C++ programming, for Python programming, for Java programming, the character set used for scripting is known as ASCII character set. आई होप कि आपने ये सुना होगा, बट सुना भी नहीं होगा तो आगे जाके जब कैरेक्टर्स का डिस्कशन होगा तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बातें करने वाले हैं। सो लेट मी टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ दिस, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आपका जो कीबोर्ड है उसके ऊपर के जितने भी कीज है उन कीज को एक स्पेसिफिक नंबर से डिनोट किया गया, एंड दैट पर्टिकुलर कोड इज नोन एज ASCII कोड। तो जितने भी कैरेक्टर्स कीबोर्ड पे है तो we call them as a character set, and the keyboard is generally known as ASCII keyboard, right? तो यहाँ के अल्फाबेट्स इधर बन चुके हैं कैरेक्टर सेट्स, राइट। एंड C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एज वेल एज पाइथन लैंग्वेज, ये सारे के सारे लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। सो व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिविटी इन द लैंग्वेज? अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स आर डिफरेंट। सो फॉर एग्जाम्पल ये मेरे लिए जब मैं लिख रहा हूं एंड आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, ये दोनों भी मेरे लिए अलग अलग है। सो कंपाइलर इज गोइंग टू ट्रीट दिस टू एंटिटीज एज अ डिफरेंट एंटिटी। कॉन्सेप्ट इज नोन एज केस सेंसिटिविटी। सो लेट मी समराइज दिस। यहां के अल्फाबेट वहां पे जाके क्या बने? कैरेक्टर सेट। विच कैरेक्टर सेट इज यूज्ड? ASCII कैरेक्टर सेट इज यूज्ड, एंड द लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। So now the next thing is, though we say that alphabet is the lowest level entity in the language जो scripting के लिए यूज हो रहा है, but do we communicate in alphabets? सोचते हैं इसके बारे में, हम लोग अल्फाबेट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं क्या? फॉर एग्जाम्पल, वॉट एवर आई एम सेइंग एट दिस मोमेंट, एम आई कम्युनिकेटिंग थ्रू अल्फाबेट्स? और एक एग्जाम्पल के साथ, इफ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दिस, आई एम टॉकिंग, तो आपका ब्रेन इसको अल्फाबेट में डिवाइड करे जा रहा है या इट इज डिवाइडिंग इट इनटू वर्ड्स? डेफिनेटली यू विल से दैट दिस इज डिवाइडिंग इट इनटू वर्ड्स। तो though the alphabet is the smallest level entities for scripting, but communication का smallest level entity becomes word. So हम लोग word के साथ communicate कर रहे हैं, right? I'm not saying IAMTALKING. I'm saying I am talking. So the smallest entity for communication is words. किसमें? Communication language में। ये इंग्लिश है तो हम लोग उसको word कहेंगे, मराठी है तो उसको शब्द कहेंगे, हिंदी है तो इसको शब्द कहेंगे, जापानीज है तो उसको कोतोबा कहेंगे, राइट। सो व्हाट आई वांट टू इंसिस्ट अगेन इज, जैसे लैंग्वेज बदलेगा वैसे उसके टर्मिनोलॉजी चेंज होंगे, तो यहाँ पे भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अलग टर्मिनोलॉजी को यूज करना है। एंड जैसे लोएस्ट लेवल टोकन्स इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज आर नोन एज वर्ड्स, वहां पे lowest level tokens for programming language has given a very special name, and let me write that name. The lowest level tokens in programming language is identified as lexical tokens. Lexical tokens. For example, जैसे आपके ब्रेन में I am talking को वर्ड्स में डिवाइड किया, वैसे ही जब हम लोग कंपाइलर को कोई कोड देंगे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग द कोड एज printf hello, and in that case compiler is going to divide it into this parts, and such tokens are known as lexical token. Definitely we are learning programming language, तो यहाँ पे बड़े बड़े टेक्निकल टर्म्स आएंगे, डरना मना है।
हम लोग इसको रिलेट करे जा रहे हैं किसके साथ, कम्युनिकेशन लैंग्वेज। तो इसके बाद ये बहुत स्मूथ, सिंपल, इजी होने वाला है, राइट। तो यहाँ के वर्ड्स उधर जाके क्या बन रहे हैं, लेक्सिकल टोकन। एंड आई फाउंड दैट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग अगेंस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वर्ड जब आपके सामने आता है तो आप समझ नहीं पाते हो कि क्या लेक्सिकल टोकन्स है, क्या कैरेक्टर सेट है, व्हाट इज दिस आस्किंग, एंड फर्दर ऑल द टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू डिस्कस। बट यहाँ के वर्ड्स अभी यहाँ पे जाके क्या बने हैं, लेक्सिकल टोकन। जैसे जैसे लैंग्वेज बदलेगा वैसे वैसे टर्मिनोलॉजी चेंज होते जाने वाले हैं, राइट। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट जोन। अभी sometimes we are using some names, some words for identification of some entities. For example, whatever I am showing to you, this is stylus, so named as a stylus, right? This is named as a watch, this is named as a ring, this entire board is named as interactive board. So क्या चीजें हैं, मैंने इन वर्ड्स को यूज किया, स्टाइलस वर्ड को यूज किया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस एंटिटी। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को क्लास को नाम देना है, ऑब्जेक्ट को नाम देना है, वेरिएबल को नाम देना है, फंक्शन को नाम देना है, लेबल को नाम देना है, सब चीजों को किसी ना किसी नाम से आइडेंटिफाई करना है। एंड नेमिंग इज अ वेरी जेन्युइन गेम इन द रियल वर्ल्ड आल्सो, राइट। हर चीज को किसी ना किसी नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। So when it is English, we call it as names. मराठी में उसको नाव कहेंगे, हिंदी में उसको नाम कहेंगे, जापानीज में उसको नामाई कहेंगे। सो वैसे ही जैसे लैंग्वेज बदलेगा तो ये वर्ड बदल जाएगा, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में द लेक्सिकल टोकन्स विच आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस इज नोन एज आइडेंटिफायर। रिपीट कर रहा हूं, the lexical token which is used for identification purpose is known as identifier, is known as identifiers, right। तो यहां के नेम्स वहां जाके क्या बने, आइडेंटिफायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी, बहुत बार आपको चाहिए, because every time whenever you are giving certain identity or certain name to any entity in the programming, you are in need of these identifiers, right? So character sets, lexical tokens followed by identifier. Now the next very interesting terminology comes. ऐसे कुछ lexical tokens है जिनको आप आइडेंटिफायर करके यूज नहीं करोगे। ऐसे कुछ लेक्सिकल टोकन्स है जिनको आइडेंटिफायर करके यूज नहीं करोगे, एंड दोज आर रिजर्व्ड इन द लैंग्वेज एंड दे आर नोन एज कीवर्ड्स, राइट। ऐसे कुछ लेक्सिकल टोकन्स है जो क्या करके यूज नहीं हो पा रहे, आइडेंटिफायर करके यूज नहीं होंगे, उनको कहेंगे हम लोग कीवर्ड्स, एंड दे आर रिजर्व वर्ड्स इन द लैंग्वेज। So when we are talking about a specific language like C, fixed reserve words है, C++ fixed reserve words है, Java के लिए fixed keywords है, Python के लिए fixed keywords है। So this is a very special identity about the programming language, जहां पे आप इन keywords को क्या करके यूज नहीं कर पाओगे, आइडेंटिफायर करके यूज नहीं कर पाओगे, right? So character set, lexical tokens, some tokens are used for identification purpose known as identifier. Some tokens cannot be used as an identification purpose, they are reserved in the language known as keywords, right? Okay, do we have some keywords in English? हाँ, आपने जब इंग्लिश पढ़ा तो कीवर्ड्स ऐसे उसको पढ़ा नहीं होगा, प्रोबेबली यू माइट हैव स्टडीड दिस आई, वी, यू, you, he, she, it, and they, right? Okay, these are reserved words, right? They are used for a specific purpose in the language. Do you have any of your friend whose name is he or she or it? Definitely not, क्योंकि ये जो entities है उनको किसी specific काम के लिए रिजर्व किया गया लैंग्वेज में। So those are known as what? Keywords, right? Okay, I hope you must have understood character set, lexical tokens, identifiers as well as keywords, right? So there are certain specific rules for identifier. There are certain specific rules for
आइडेंटिफायर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एंड ये आगे का स्लाइड्स आपको वो रूल दिखा रहा है। सो ध्यान से देखना है कौन कौन से रूल्स हैं। रूल्स आर वेरी सिंपल फॉर यूजिंग आइडेंटिफायर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। Now, let's see something about the Python keywords. And Python goes with 33 keywords in it. तो नेक्स्ट स्लाइड पे आने वाले हैं 33 कीवर्ड्स ऑफ द पाइथन। ध्यान से देखना है, उनको नोट डाउन करना है, बिकॉज जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे तो एंटायर कीवर्ड्स हैज टू बी टच्ड अपॉन। I hope you have noted down all the keywords and you understood the rules of identifier. Now let's move into the very interesting concept. उसके बारे में थोड़ा सा पहले डिस्कशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, if I am writing a entity onto the board, what you call this in India, you will say that, sir, this is A. What it is in America, America also it is A. Australia also it is A. Japan also it is A. Right? So I mean to say that ये जो character है, that is constant everywhere across the globe. Right? For example, if I write something like this, ये 123 है अपने भारत देश में, ये 123 है जापान में भी, ये 123 है अमेरिका में भी, ये 123 है across the every corner of the globe. So can I call these entities as constants? Definitely yes. Right? So constants in programming language has been given a different name, and constants in programming languages is identified as literals. Constants in programming languages are identified as literals. तो ये अपने vocab में आने चाहिए ये words, right? So you must say that, oh, this is a lexical token, this is an identifier, this is a keyword. Constant को आप कहोगे, this is a literal. So let's see like what are the different literals that are available in Python. So in case of Python, we could be able to see that character literal जो है, generally in many of the language it is mentioned with single quotes, right? But in Python, character and strings can be represented in either single quotes or double quotes. So जो लोग C++ से Python में आए या Java से Python पढ़ने आए, उनके लिए ये थोड़ा सा स्ट्रेंज हो सकता है, बिकॉज इन C++ एंड इन Java सिंगल कोट्स में हम लोग लिखते हैं कैरेक्टर लिटरल, डबल कोट्स में हम लोग लिखते हैं स्ट्रिंग टाइप के लिटरल्स. सो स्ट्रिंग टाइप, स्ट्रिंग लिटरल, राइट? ओके, ऐसे. बट इन पाइथन वी विल बी कॉलिंग बोथ ऑफ दिस टाइप. अगर आप सिंगल कोट्स में लिखो या डबल कोट्स में लिखो, वी विल बी कॉलिंग इट एज string literal. So no discrimination, no मतलब separation for string as well as character. आपको एक character भी लिखना है तो आपको डबल कोट्स में character लिख सकते हैं या सिंगल कोट्स में पूरा string भी लिख सकते हैं, like that, right? Okay. Second type of literal present in the Python is integer literal, and these are any number without radix point. And there is one more literal type known as float literal, और इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, रियल लिटरल, एंड दैट इज एनी नंबर विद रेडिक्स पॉइंट.
Yes, that you can treat it as what? Literal. So these are the various literal types of Python programming language. Now let's move into the next interesting terminology. तो यहाँ पे कैरेक्टर सेट, लेक्सिकल टोकन्स, आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड उसके बाद डिस्कशन हुआ लिटरल्स का, राइट. So one more interesting terminology comes and that is known as comments. That is known as comments. So what are basically comments is? For example, let me relate it with the real life. अगर आपके ऊपर कोई कमेंट कर रहा है तो व्हाट यू शुड डू इन दैट केस? डेफिनेटली यू विल से दैट सर हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए वो. सो जो भी लाइन हम लोग कमेंट में लिखेंगे दैट विल बी इग्नोर्ड बाय पाइथन इंटरप्रेटर, राइट. सो पाइथन में फिर कमेंट्स को कैसे लिखना है? वन स्पेशल सिंबल इज यूज्ड एंड दैट सिंबल इज हैश. उसके बाद उस लाइन पे जो भी आप लिखोगे दैट विल बी ट्रीटेड एज कमेंट बाय पाइथन इंटरप्रेटर. सो ये हुआ सिंगल लाइन कमेंटिंग का फॉर्मेट. नाउ सिमिलर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा, जहां पे मल्टी लाइन कमेंट्स को भी सपोर्ट किया है. कैन वी हैव मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन? एंड डेफिनेटली यस. सो मल्टी लाइन कमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वी हैव अनदर सिंटैक्स एंड दैट इज 3 कोड्स फॉलोड बाय, आप जो भी लाइंस कमेंट में लिखना चाहते हो वो लिख दो एंड उसको एंड करना है अगेन 3 कोड्स के साथ, राइट. ओके, एंड दिस विल गिव यू द फॉर्मेट ऑफ व्हाट? मल्टी-लाइन कमेंट इन पाइथन, राइट. डेफिनेटली दोनों के दोनों कमेंट फॉर्मेट यूज करेंगे जब आगे बढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में. So most of the time comments are used for increasing the readability of the code as well as for documentation purpose, right? So यहाँ पे ये पता चला है कि Python goes with 2 types of the comments and one is single line comment hash followed by उसी line पे जो भी लिखेंगे single line comment and then 3 quotes followed by multiple lines end करेंगे 3 quote के साथ. So these are what? Multi-line comments. So I hope you must have understood the basic terminologies of the programming language fundamentals: character set, ASCII character set, case sensitivity, smallest level tokens of communication in programming language known as lexical tokens. Some tokens are used for identification purpose known as identifier. Some cannot be used as an identifier known as keyword. Keyword का listing भी देखा. Then constants in programming languages are known as literals and followed by comments. दो और चीजें यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब भी आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उस समय आपके प्रोग्रामिंग में जनरेट हो सकते हैं एरर्स एंड जनरेट हो सकते हैं वार्निंग्स, राइट. सो आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट एंड आई एम गोइंग टू शो यू कौन सा केस में वार्निंग जनरेट होंगे, कौन से केस में एरर जनरेट होंगे. लेट अस कनेक्ट इट विद द रियल वर्ल्ड. If I write a statement as I am talking, and if I ask you like whether this statement is perfect or not, तो आप आपका इंग्लिश का ग्रामर का जो भी नॉलेज है वो यहाँ पे लगा देंगे एंड यू विल से दैट यस, आई के बाद एम आ चुका है, एम के बाद आईएनजी वाला पैटर्न, उसके बाद फुल स्टॉप. सो सर ने जो स्टेटमेंट लिखा है वो ग्रामेटिकली परफेक्ट है, दैट्स फाइन. सो आपने अप्लाई किया ग्रामर को to identify whether this statement is perfect or not. But if I write a statement as I are talking, right? If I keep on saying something like I are talking, I are showing you these slides, I are giving you this seminar, it doesn't suits to our ear also. सुनने को अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज आपने ग्रामर में आई के साथ ये एंटिटी देखा नहीं. तो यू आर thinking about missing something across the grammar. ग्रामेटिकल पैटर्न्स के हिसाब से ये स्टेटमेंट नहीं जनरेट हुआ. सो ऐसा अगर अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो रहा है कि इफ ग्रामर इज नॉट प्रॉपरली फॉलोड देन इट विल जनरेट द एरर्स एंड उन एरर्स को हम लोग कहेंगे व्हाट? सिंटैक्स एरर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका हर कोड का लाइन सी से प्लस प्लस में एंड होना चाहिए सेमीकोलन से, the moment you miss out one of the semicolon, compiler starts giving you error because वो
C++ के ग्रामर के सिंटैक्स के हिसाब से आपने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, एंड कंप्यूटर सिस्टम्स आर वेरी रिजिड अबाउट द ग्रामर, very rigid about the syntax, right? So syntax error. Now let me tell you what the warnings are, and then I'll show you कि exactly errors कहाँ पे है and warnings कहाँ पे है, right? Okay, if I go with I am flying, ये स्टेटमेंट मैंने लिखा, एंड इफ आई एम आस्किंग यू वेदर दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट और नॉट, एंड यू विल से दैट आई के बाद एम के बाद फ्लाइंग एंड दिस, इट इज फाइन, राइट? जैसे आई एम टॉकिंग वाज फाइन, वैसे ही आई एम फ्लाइंग इज आल्सो फाइन, बट डज इट साउंड्स मीनिंगफुल? ये मीनिंगफुल स्टेटमेंट था, ये सिंटैक्टिकली करेक्ट भी था एज वेल एज मीनिंगफुल भी था, बिकॉज मैं अभी बड़बड़ कर रहा हूं तो आई एम सेइंग आई एम टॉकिंग, बट एम आई फ्लाइंग? नो। तो ये सिंटैक्टिकली करेक्ट होके भी यहाँ पे मीनिंग मिसिंग है, तो उस समय जनरेट होता है, यहाँ पे सेंटेंस के सिमेंटिक्स आर मिसिंग, सो वी कॉल दिस एज सिमेंटिक वार्निंग्स। क्या कहते हैं उसको? सिमेंटिक वार्निंग्स। तो जैसे मतलब कुछ लाइन तो लिख दिया आपने प्रोग्राम में, सिंटैक्टिकली परफेक्ट है, बट कंपाइलर को समझ में नहीं आ रहा है आपने वो लाइन क्यों लिखा, तो उस केस में जनरेट होगा सिमेंटिक वार्निंग्स। नाउ लेट मी शो यू कि एक सिंपल कोड देखते हैं जहां पे सिंटैक्स एरर है एंड सिमेंटिक्स वार्निंग्स है, तो कैसे कंपाइलर शो करेगा। सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली। तो यहां पे देखते हैं व्हाट इज syntax error and semantic warnings are. So this is a simple code that we know that it is going to print successes always, and let me show you whether compilation process is successful or not. तो यहाँ पे compilation process is successful because there are no errors as well as no warnings. But please observe, the moment I missed this semicolon, the moment I miss this semicolon, and if I save the code and try to compile it, compiler is not happy, right? It shows me that there are two errors को देखते हैं, and it says statement missing. तो ये statement missing है, what it is missing is semicolon. As there is no semicolon, it also gives the error for the next line. Also, compiler is not happy with your code, right? So this kind of issues related to syntax of the programming language will always generate syntax error. And अगर आपके प्रोग्राम में syntax error है, प्लीज ऑब्जर्व, तो आप प्रोग्राम को रन नहीं कर पाओगे, यू कांट डू दैट, राइट? ओके, सो लेट अस सी लाइक अभी वार्निंग का क्या एस्पेक्ट है। आई विल पुट माय कोड एज सिंटैक्स एरर फ्री, सेव करते हैं, एंड नाउ एरर तो मैंने निकाल दिया, राइट? पर अभी इस प्रोग्राम में हम लोग एक वेरिएबल, दो आई नो दैट वेरिएबल का डिस्कशन अभी तक हुआ नहीं है, बट एटलीस्ट इस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप मेरे साथ रहो। ऐसे इंटीजर a इज इक्वल टू 10, मैंने a नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ऑफ टाइप इंटीजर, उसके अंदर वैल्यू दिया है 10, बट ये वेरिएबल डिक्लेयर डिफाइन तो हुआ है पर मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूं। सो लेट अस सी लाइक व्हाट कंपाइलर सेज इन दिस केस। There is no syntax error for this line, but what compiler says, it gives me a warning, and ये कह रहा है a is assigned to the value that has never been used. मतलब हमने उसको डिफाइन किया क्यों? अगर आपको यूज नहीं करना था तो कंपाइलर को यहाँ पे इश्यू समझ में नहीं आ रहा है कि why this programmer has defined this line, जबकि उसको यूज ही नहीं करना था, राइट? सो इफ सिमेंटिक्स में मतलब अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो इट जनरेट्स सिमेंटिक्स वार्निंग्स, एंड इफ there is a problem with respect to syntax, then it generates syntax error. अगर आपके कोड में एरर्स है, कोड को रन नहीं कर पाओगे, बट वार्निंग्स है, तो वी कैन डेफिनेटली रन द कोड। लेट मी शो यू प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन, राइट? लेट मी शो यू द यूजर स्क्रीन, एंड यहाँ पे प्रिंट कर दिया उसने सक्सेसेस ऑलवेज। सो वार्निंग होते हुए भी हम लोग कोड को रन कर सकते हैं, बट वार्निंग मीन्स इट इज गिविंग यू सम सजेशंस दैट सिमेंटिकली इट इज मीनिंगलेस। सो दोनों के तरफ भी हमको ध्यान देना है, सिंटैक्स एरर के तरफ तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तब तक हम लोग कोड को रन नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली वार्निंग्स के ऊपर भी बहुत सारा फोकस करेंगे टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर, राइट? सो इस सेशन में व्हाट वी हैव डन इज
I hope these all terminologies along with the two terminology, and those two terminologies are syntax error and what is it? Semantic warnings. So 8 terminologies about programming language must be clear to you all. सेशन एंड वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, आई डू एग्री, बट इस सबसे लंबे थियोरेटिकल सेशन में हम लोगों को सारे टर्मिनोलॉजीज पता चल गए जो हम लोग अपने लाइफ में आने वाले सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज करने वाले हैं. सो कैरेक्टर सेट, लेक्सिकल टोकन्स, some tokens are used for identification known as identifiers, some cannot be used as an identifiers known as keywords. Constants in programming languages are known as literals. You can skip some code lines from compilation and interpretation process by using comments. Compiler and interpreter may generate syntax errors and semantic warnings. So with this 8 basic terminologies, let's dive into more deeper into the programming language. इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में मूव करेंगे into some concrete detailings about the programming. That's it for this session. Thanks for the watching. Happy learning.